So transaction means an exchange of goods and or services between two or more people for money or money's worth. Every bit of transaction, every word used in the definition of transaction is important, because if anything is missing, transaction के definition में से अगर exchange missing है, then also we are not going to record that transaction in the accounts, even if money or money's worth is not there, and if it is not between the two or more people, we are not going to record that transaction in the books of the accounts. Okay, so in accounts, monetary concept says that every transaction should be attached with some monetary value. If no monetary value is attached to that transaction, it will not recorded in the books of the accounts. For example, barter transaction, where we simply exchange the goods with the goods without attaching any monetary value. For example, if I give my car to a friend, okay, and that is a business car, that is a car which is used in the business, and I say that he is a tempo vendor and he have a tempo which I want for a day. तो मैंने उसे कहा कि आपका टेम्पो एक दिन के लिए मुझे दे दो और आपको चाहिए तो मेरी आज के दिन आप कार रख लो. Now there is an exchange. There is an exchange between two or more people, but there is no monetary value attached to it. मैंने ये नहीं कहा कि टेम्पो आप मुझे रेंट पे दे दो और एक दिन का आपका जो भी रेंट है आप उसे ले लो. It is simply an exchange without attaching any monetary value. This kind of transaction you cannot record in the books of the account. So if monetary concept is one of the basic concept of accounting, it is also a limitation of accounting. जो चीज आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे वो आप अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे. And believe me, this is the area where today the future generation will be working on this, how we can improve upon this limitation. There are so many things here which right now cannot be recorded into the accounts because no monetary value is attached to it. For example, if you look at any IT company, ठीक है, IT कंपनी का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? Why they are paying lakhs of rupees to the engineers? Why they are paying so much of money to them? What do you think? क्यों इंजीनियर्स को इतना अच्छा सैलरी मिलता है, पैकेज मिलता है, टीम लीडर्स को इतना अच्छा सैलरी और पैकेज मिलता है? Why? Yes, yes, tell me. No idea. Do you want good packages or not? After completing your graduation, post graduation, maybe you will be doing professional degrees, CACS. Do you want to earn good money or not? क्यों देना चाहिए आपको किसी ने पैसे? Why they should pay you so handsomely? Yes, Pooja. I have no idea. आप नहीं चाहते हो कि आपको अच्छी जॉब मिले, आपको अच्छा आपकी अच्छी अर्निंग हो? Do you wish or not? आप चाहते हो कि Yes, नहीं ma'am. चाहते हो? चाहती हूँ. Right, आप चाहते हो तो आपको वहां पे पहुंचने के लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे. People will pay for your skills, for your knowledge. Yes. Why these IT people are paid? Because of their knowledge. Now, can we judge their knowledge in terms of monetary value? Not exactly. We can't say that if we are giving you an 1 lakh rupees, you are worth rupees 1 lakh. There is no accurate one-to-one matching to this. So human resource accounting is a challenge. The health of your employees is equally important. If their health is not good, they will not perform well. Even though you are paying them, if they are taking repeatedly leaves because their health is not good, then they will not perform well. So these human resources should be actually treated as our assets. They are assets to the organization. But today we cannot capture their value of their health, and that's what it cannot be considered as an asset of the organization. So the future era in the accounting is going to be this, that how we can capture those subjective things which today cannot be judged, which cannot be measured in terms of money. So remember, if monetary value is an advantage, is a concept of accounting, it is also a limitation of accounting.
So barter transaction will not be recorded in the books of the accounts. Clear? Now come to the monetary transaction. Now when should we record this monetary transaction in the books of the accounts? हमें कब ये transaction books of accounts में record करने हैं? ठीक है? Now I have a business and I started with the business. First day of my business, I brought in a capital into my business. मैं कैपिटल लेकर आ गई, मेरे पास 10 लाख रुपए आज बिजनेस के ड्रॉवर में है. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कंटिन्यू. ये बिजनेस है और ये ओनर है. ओनर पैसे लेके आ गया बिजनेस में. नाउ आई हैव अ कैश इन माय ड्रॉवर. व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दिस कैश? क्या करेंगे हम? सबसे पहले गो बैक टू द डे वन. क्या करेंगे हम? क्या करेंगे उस कैश के साथ? कैपिटल लाया 10 लाख रुपए का. सबसे पहले हम उससे एसेट्स खरीदी करेंगे. We will buy the furniture or any setup that we need. We'll buy the office on rent or something. Correct. So this money will be put into the asset somewhere. So जैसे ही आपके ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट होगा, you will have to record that transaction on a daily basis. हर रोज जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो अकाउंटिंग के टर्म्स में हमें रिकॉर्ड करने हैं. So let's take an example. There is a businessman who keeps his books of accounts. Give me a minute. Yeah. Now transaction को कब और कैसे रिकॉर्ड करना है? Yes. So his day started and there is a businessman. The first transaction happens is he purchased the raw material rupees 10,000 of cash. उसने सप्लायर को कैश दिया 10,000 रुपीज का एंड ही टुक द रॉ मटेरियल. तो क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? लेट्स चेक दैट. इफ ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड, क्या है डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन? देयर हैज टू बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो एक्सचेंज हुआ क्या गुड्स का? क्या हमारे ओनरशिप में एसेट्स आ गए? क्या हमारे ओनरशिप में गुड्स आ गए? यस, Yes, ma'am. गुड्स आ गए. तो फर्स्ट क्लियर. इज इट बिटवीन टू और मोर पीपल? Yes, it is between two or more people. Is it for money or money's worth? Yes, it is for money or money's worth because 10,000 के हमने goods ले लिए. Now ये businessman, इसको record करना है ये transaction अपने books of accounts में. He will be recording this in a form of a journal entry. ठीक है? The first primary entry, the first entry that we have to do in the books of accounts is called as a journal entry. उसके बाद there is something called as a ledger. उसके बाद there is something called as a trial balance, and then comes the profit and loss and balance sheet. Now right now I'm not going to go into how this transaction will be recorded in terms of debit and credit, but first understand how it will be reflected in your profit and loss account, say for the month of September. So on 1st September he buys this, he purchased this. It is in terms of cash. he give a cash. जो उसने कैपिटल के तौर पे कैश लाया था, जो बिजनेस के ड्रॉवर में था, इसने ये कैश दे दिया. Now we said profit and loss account will be showing here the income. On this side it is showing the income. Just keep your mind open. Don't ask anything why it is here. Income इसी बाजू में क्यों है और क्या है. For a time being, just keep all those questions aside and just imagine how the profit and loss account looks like. Okay. So purchase of raw material will be an income for him or expenditure for him? Simple question. What it is for him? खर्चा है कि इनकम है? रॉ मटेरियल को परचेज करना उसके लिए. What it is? Yes. Yes, सुयोग. काय त्याच्यासाठी? Yeah, expenditure. Purchasing and raw material is an expenditure.
So purchases should appear over here. How much? 10,000. Now the second transaction happens on a say 2nd of September. उसने जो परचेज किया था उसने उसको पैकेजिंग किया, he put in some value addition किया उसके ऊपर and he tried to sell this. So he sold this goods, sold for rupees 15,000 and again he collected a cash from the customer. तो उसके पास कैश आया और उसने गुड्स दिया, तो क्या एक्सचेंज हुआ? ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो गया, अब वो गुड्स हमारे नहीं है, वो कस्टमर के बन गए. Is it between two or more people? Yes. Is there money worth attached? Money or money is worth attached? Yes. 15,000 की goods है. Now sell करना हमारे लिए क्या है? Income है. Correct? To sell anything is our income for us. So he will be mentioning this here. Sales में mention करेगा ये 15,000. Now if I say you that he had a credit terms with the supplier and the vendor and he's not buying this immediately for cash. He don't want to give his cash immediately because keep the light on, reflection method. So when he's going to buy second lot of purchases, he first tested कि ठीक है रॉ मटेरियल अच्छा है सब कुछ है बट उसको तुरंत कैश आउटफ्लो नहीं करना है. So when he buy a second lot on 5th of September, he purchased the raw material on credit. Now what we said, what is a credit transaction? So he purchased another lot of 50,000. 50,000 का raw material लिया from ABC Company Limited on credit. What is credit transaction? Not immediately exchange of money. Not immediate exchange of money. So should he record this as a purchase in this month immediately? This is a profit and loss account for the month of September 2020. Should he record this transaction as a purchase immediately here or should he not? Because it is on a credit basis. What should he do? Yes, what do you think? क्या ये ट्रांजैक्शन को परचेज करके रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने तो कैश दिया नहीं, तो क्या ये हमारा इस मंथ का एक्सपेंडिचर है या नहीं? But the bill is ओके पर वो चीज तो हमारे पास आ रही है ना. चीज हमारे पास आ रही है, करेक्ट. यस, हाँ तो यही पे मेंशन कर देंगे. यहीं पे सितंबर के मंथ में हम इसको हाँ. रीड कर देंगे. ओके, यस, समवन सेड टू यू, यू सेड समथिंग. ma'am, the bill is made na. Yes, the bill is made. We got the bill also, correct. और हमारे So पास the transaction should be recorded. या तो हमारे पास इनफैक्ट डिलीवरी भी आ गई, हमारे पास गुड्स भी आ गए, तुरंत गुड्स आ गए. बट सिर्फ इतना है कि हमने उससे क्रेडिट टर्म लिया तो हमने कहा कि 1 महीने बाद बिल पे करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस नया है, हमें पता नहीं है कि क्या कितना रॉ मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा. वी वांट टू चेक योर क्वालिटी एंड एवरीथिंग. विल पे यू आफ्टर अ मंथ टाइम. तो आप लोगों का कहना है कि तुरंत रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, करेक्ट. यस, एनीवन एल्स ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन? किसी का और कोई दूसरा ओपिनियन है? नहीं, ठीक है. So here comes. It is up to a businessman to decide when he want to record that transaction. Even though the transaction has happened, the businessman have two choices. That he can maintain a cash system of accounting. Okay, the first system of accounting on the basis of which he can record the transaction is cash system. दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि फॉन्ट थोड़ा छोटा लग रहा है? ठीक है, देखो, आई लिटिल मेड इट लिटिल लार्जर. सो फर्स्ट सिस्टम इज कैश system of accounting. This accounting system says that a businessman who wants to follow and cash system of accounting, he will record that transaction only when cash is exchanged. The person who is follow the cash system of accounting, he will record the credit transaction only when cash is exchanged. For this meaning, if he is going to pay this bill in the month of October,
If he is making a payment in the month of October, say on 5th of October, after a month's time, he paid this bill to ABC Company Limited. And he is following the cash system of accounting. He is not going to record this as a purchases in the month of September, but he will be recording this as a purchases in the month of October. In the month of September, what he is going to do? He's just going to record that I have purchased this much of raw material and I have to pay this much of amount to the ABC Company Limited. He's not going to record this as a purchases. तो जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब आप कोई ग्रोसरी शॉप में उधारी पे चीज कोई लेने जाते हो, क्रेडिट पे लेने जाते हो, करेक्ट? व्हाट डू शॉपकीपर डू? शॉपकीपर क्या करता है? आपका नाम लिखता है और लिख देता है कि आपसे इतना पैसे आना बाकी है, करेक्ट? यस और नो? वैसे ही जो ये सेलर है, ये अपनी बुक में सिर्फ एक सिंगल एंट्री करेगा कि मुझे इतने पैसे देना बाकी है फॉर द परचेसेस दैट आई हैव डन ऑन 5th of September. That's it. He is not going to record this transaction in the form of debit and credit के फॉर्म में वो इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा है. उसने गुड्स ले लिए, but he is not going to record this in the form of debit and credit. He is simply going to record this as an expenditure in the month of October. So for him, this will become an expenditure for the month of October and not for the month of September, because he is following the cash system of accounting. So small pan tapri wala doesn't understand what is credit system and what is debit and what is credit. What he do is, आज अगर उसके गले में कैश आ गई 1000 रुपए, वो बोलेगा ये मेरा इनकम है. उसने अगर कोई उधारी पे माल लेकर आया, उधारी पे मटेरियल लेकर आया वो कोई भी, तो वो कहेगा ये मेरा अब तक एक्सपेंडिचर है ही नहीं, क्योंकि मेरे गले में से 1000 रुपए वैसे के वैसे हैं. इस 1000 रुपए से मैंने अब तक कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं किया है, तो वो मेरा एक्सपेंडिचर है ही नहीं इस महीने का. जब तक मैं उसे कैश में पैसे नहीं दूंगा, मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर नहीं है. बट टू अस दिस लुक्स लिटिल वियर्ड, बिकॉज ये अजीब लगता है ना कि आपको वो चीज मिल गई और फिर भी आप इसको एक्सपेंडिचर नहीं बोल रहे हो, राइट? And that's what a second system of accounting which is followed is called as an accrual system of accounting. Okay, the second system that is being followed is called as an accrual system of accounting. So a second businessman like you who feels that कि नहीं ये सही नहीं है, अगर गुड्स मिले हैं तो कभी ना कभी तो पैसे देने ही है हमें, तो आज दो नहीं तो कल दो, हमारे लिए तो वो एक्सपेंडिचर है ही. And this is more logical. Okay, so there will be very few businessmen who will be following the cash system of accounting, जिनका basically business cash basis पे होता है, like a charitable trust. Okay, charitable trust, how they run their business, जब उनको डोनेशंस मिलते हैं तो वो डोनेशन में से एक्सपेंडिचर करते हैं. जब तक डोनेशन हाथ में इनकम करके आएंगे नहीं, तब तक वो उतना खर्चा भी नहीं करते, उतना खर्चे को वो कंट्रोल करते हैं. They will do very little transaction on credit basis because they generally follow the cash system of accounting. But then what is accrual system of accounting? A businessman which is maintaining a books of accounts on accrual system of accounting, he will record both of this transaction in the same month, whether it is cash or whether it is credit. He will record this transaction as a purchases in the same month of September. So for him, how the books would look like? उसके books कैसे दिखाई देंगे? Look at here. Are you getting the point? Difference समझ में आ रहा है आप लोगों के मैं क्या कह रही हूँ? Or are you confused? Are you getting the difference? Yes. Yes, ma'am. The businessman which is going to follow the accrual system of accounting, वो कहेगा भैया क्रेडिट पे रहे नहीं तो कैश में रहे, वो तो है इस महीने का ही खर्चा, कभी ना कभी तो पैसे देने ही है. तो he will record both of these purchases at the same time in the same month, whether it is paid in cash or credit. दोनों खर्चे एक ही महीने में रिकॉर्ड होंगे एज एन एक्सपेंडिचर. सो कैश में किया हुआ 10,000 का प्लस क्रेडिट पे किए हुए परचेसेस 50,000 के, both together he will be recording this as an
this month expenditure for 60,000. At the same time, मान लो कि उसने 2 सितंबर को कैश से सेल किया था, and on 10th of September he's selling this material that he bought over here. He repacked it. उसने उसको रीपैकिंग किया, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया, एंड अगेन ही सोल्ड फॉर क्रेडिट। उसने यही मटेरियल वापस 70,000 में क्रेडिट पे सेल किया टू अ कस्टमर मिस्टर अमित फॉर क्रेडिट, सोल्ड फॉर क्रेडिट रुपीज 70,000 टू मिस्टर अमित। अब अमित से पैसे लेना बाकी है, बट अगर उसे पूछा गया कि इस महीने का तुम्हारा सेल्स क्या है, तो ही विल से दैट आई हैव अ कैश सेल्स ऑफ रुपीज 15,000, and even though he has not received money for this credit sale, he will say I have made a credit sale of rupees 70,000. So for him, in the month of September, he will be having an income of 85,000 and expenses of 60,000. Whereas the person who is maintaining the books of accounts on a cash basis, for him, is simply having a sales income as 15,000 and purchases of 10,000. Okay. So what will be the profit for this month for this person? इसके लिए profit क्या होगा? कैसे निकालेंगे profit? Take a total of all the income. तो हमने यहाँ पे इनकम का टोटल ले लिया। अब उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करना है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो दिस इज हाउ इट इज रिटर्न। ऐसा क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, सिंपल मैथ को अप्लाई करो। अभी 85,000 इनकम है, तो 85,000 में से जब मैं 60,000 माइनस कर दूंगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट। डोंट बी बॉदर्ड अबाउट कि ये इस साइड में है, इस साइड में है, सिंपली लुक एट हाउ इट लुक्स लाइक। ओके। तो 85,000 में से 60,000 गया, कितना मिलेगा प्रॉफिट? Yes, 15,000. 15,000 will be a profit for this person for the month of September. Whereas for this person, what will be the profit? इसके लिए प्रॉफिट क्या होगा? इसका इनकम का टोटल 5,000. 15,000, उसमें से जाएगा 10,000 का परचेसेस का खर्चा जाएगा, तो इसके लिए प्रॉफिट है 5,000. Okay. Now, but this person will be showing in the next month purchases of 50,000 and next month में उसको 10th of October को इसके भी पैसे मिल गए. In fact, this has to be much more before that. आप कभी भी कस्टमर से पहले पैसे लोगे और फिर सप्लायर को पे करोगे. ओके, दिस इज हाउ कंपनी वर्क, कि पहले आपने जिसको गुड्स बेचा था उनसे पैसे ले लो. So he will be receiving 70,000 from Mr. A, from Mr. Amit on 1st of October, and then you will be paying this amount to ABC Company Limited. आप आपके फंड्स को वैसे मैनेज करोगे, आप खुद के पॉकेट से नहीं डालोगे पैसे, राइट? तो परचेसेज जो है आपने 50,000 का इस महीने में पेमेंट किया अक्टूबर में यहाँ पे, एंड आपको सेल्स के भी पैसे जो मिले वो आपको 1st अक्टूबर को मिले 70,000 के. यू विल बी रिकॉर्डिंग दिस एज अ सेल्स ईयर 70,000 and 50,000. So what will be his profit for the month of October? Total 70,000 इनकम, उसको ये साइड में कॉपी करना है एंड यहाँ पे एक नंबर निकालना है जो कि आएगा प्रॉफिट का नंबर. ओके, तो प्रॉफिट कितना दिखाई देगा? 70,000 माइनस 50,000. प्रॉफिट कितना होगा? 20,000 का. क्या मैंने कुछ नंबर गलत लिखे क्या? वेट अ मिनट. 15,000. Ma'am, the accrual basis profit is 25. हाँ, ये यहाँ पे मैंने गलत. या so 85,000 minus 60,000 will be 25,000. So under the accrual system of accounting, a businessman who is maintaining accrual system, he will show this 25,000 profit immediately in the month of September, whereas the person who is maintaining the cash system, दोनों में से एक ही सिस्टम को फॉलो करना है. आइदर पूरा तो पूरा कैश, नहीं तो पूरा accrual system. Okay, so I will come to the definition of accrual. There is a definition given for accrual. This is I am trying to explain you in a simpler language with the example. तो जो कैश सिस्टम को फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है? एक पहले सितंबर में प्रॉफिट बताएगा 5,000 और फिर अक्टूबर में प्रॉफिट बताएगा 20,000. तो दोनों मिला के इसका भी प्रॉफिट 25,000 ही है.
Only difference is the point of time when you are showing this as an income and expenditure. Okay, clear? प्रॉफिट 25,000 ही है, ये पूरा का पूरा सितंबर में बता रहा है, जबकि ये इस प्रॉफिट को 2 पीरियड में स्प्लिट हो रहा है इसका प्रॉफिट. So cash system of accounting means recording only the cash transaction, maintaining your books of accounts on a cash basis. Only when cash is received and only when cash is spent, you will record it as a transaction for that month. Whereas accrual system of accounting says it will record both the transaction, cash as well as credit, in the same month in which month that transaction is happening. That transaction has happened, as in your expenses and as in your income. Accrual system does not wait for cash to be received or cash to be paid. Okay, ठीक है? तो accrual system में दोनों टाइप्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं एक ही साथ, कैश ट्रांजैक्शन भी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी. बट कैश सिस्टम में सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं. जहाँ पे इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ मनी है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन उस मंथ में रिकॉर्ड होंगे. क्लियर? ठीक है. नाउ विच सिस्टम इज मोर गुड? कौन सी सिस्टम ज्यादा अच्छी लग रही है? कैश और सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम, विच इज मोर लॉजिकल? और accrual. Accrual system. Accrual. Yes, and that's what all the companies in Korea are supposed to do. An accrual system of accounting, are supposed to follow an accrual system of accounting and not the cash system of accounting. Very few people will be following the cash system. It's not wrong, but it is like how at a global level we have to look at this. All the companies throughout the globe follow the accrual system of accounting. Government give you an option, but income tax doesn't give you an option. I mean, income tax में जो छोटे vendors हैं उनको cash system पे books of accounts को maintain करने का option है, but बड़े companies को, partnership firm को, किसी को भी cash system follow करने का option नहीं है. Okay? जिनका business mainly इस तरीके से चलता है कि cash आया तो खर्चा करेंगे, otherwise cash नहीं है तो खर्चा कहाँ से करें? Like that type of people will maintain a cash system of accounting. So let's look at now the definition of cash basis and Ma'am. accrual basis. Yes. NGOs can use the accrual basis. NGOs they आहेत ना, त्यांचे day to day transaction they basically run it on a cash basis. पण त्यांना पण त्यांचं income and expenditure जे बनवावं लागतं ते accrual basis वरच बनवावं लागतं. बेसिकली काय होतं माहिती का, एनजीओ जे आहेत ना ते कसा विचार करतात की डोनेशन आले तरच ते खर्च करू शकणार आहेत. एनजीओचा प्रॉब्लेम काय आहे, ते नॉन चॅरिटी, ते नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, आय मीन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन. करेक्ट? त्यांचा मोटिव्ह हा नाही की प्रॉफिट कमवायचा आहे, पण त्यांना त्यांची कॅश व्यवस्थितपणे मॅनेज करावी लागते, कारण की जर त्यांना डोनेशन आले नाहीत तर ते खर्च कसा करणार. म्हणून त्यांचं जे डेली अकाउंटिंग असतं दॅट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॅश. बट ऍट द एंड ऑफ द इयर ते इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवावं लागतं, ज्याला आपण इथे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट म्हणतो. ते त्यांचं अक्रुवल सिस्टीम वरच होतं. accrual पण वापरू शकता. येस, डेली बेसिसवर त्यांना गरज नाही पडत अक्रुवल वापरायची, पण ऍट द एंड ऑफ द इयर they will maintain their they will prepare their profit and loss account on a accrual system. See, वर्षभर तुला तुझे ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करायचे, तर मग वर्षभर तू ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करताना कुठली सिस्टीम तुला फॉलो करायची? वर्षभर ते ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करताना दे विल फॉलो कॅश सिस्टीम. पण वर्षाच्या शेवटी जेव्हा देर इज समथिंग कॉल्ड एज अन ऍडजस्टमेंट, दॅट्स व्हॉट अकाउंटिंग मध्ये जेव्हा आपण फायनल अकाउंट शिकू तेव्हा आपण बघू की काही गोष्टी तुम्ही वर्षभरामध्ये रेकॉर्ड नाही करत, पण त्या वर्षाच्या शेवटी तुम्हाला ऑन अक्रुवल बेसिसवर कन्सिडर कराव्या लागतील. But generally they follow the cash system of accounting. Okay, non-for-profit organization follow cash system of accounting. We'll see this in this paragraph. And काही दिवसांनी जेव्हा आपण फायनल अकाउंट पर्यंत पोहोचू ना तेव्हा तुला एकदम क्लिअर होईल की काय अक्रुवल आहे आणि काय कॅश सिस्टीम आहे ते. इनफॅक्ट द मेजर
game in the industry is. Why? See, आज पण का chartered accountants लागतात industryला? Because they have a clear understanding of how to maintain an accrual system of accounting, which a normal accountant or a junior accountant may not have. खूप साऱ्या अशा गोष्टी असतात की तो त्या वर्षीचा जो खर्च आहे तो त्याच वर्षी रेकॉर्ड झाला पाहिजे, मग तो कॅश मध्ये असू दे किंवा क्रेडिट मध्ये असू दे. ही जी अंडरस्टँडिंग आहे ह्याला जी डेप्थ लागते दॅट इज देअर टू दॅट मॅनेजर, टू दॅट चार्टर्ड अकाउंटंट, अँड दॅट्स व्हॉट दे आर बीन पेड लॅक्स ऑफ रुपीज. नॉलेज काय, त्यांच्याकडे एक्सपिरियन्स कशाचा आहे, असे खर्च शोधून काढायचा की जे ऍक्च्युअल कॅश मध्ये झालेले नाहीयेत पण जे होणार आहेत, पुढे जाऊन आपल्याला द्यावे लागणार आहेत, ते याच वर्षी तुम्हाला एक्सपेंडिचर म्हणून रेकॉर्ड करावे लागतील. हे अनालाइज करण्याचं टेक्निक्स आणि नॉलेज त्यांच्याकडे असतं. ओके. Yes, yes. So basis of accounting, there here they have given the 3 bases of accounting, and last one I would cover it up, and but practically this is not being used in most of the cases. So basis of accounting, a cash basis, an accrual basis is also called as a mercantile basis, and the last one is the mixed or hybrid basis. So let's look at the cash basis. Under the cash basis of accounting, actual cash receipts and actual cash payments are recorded. In this basis, the revenue is recognized when cash is received. Now, revenue is recognized म्हणजे तुम्ही कधी तुमचं सेल्स रेकॉर्ड करणार, जेव्हा तुम्हाला ऍक्च्युअली कॅश मिळणार तेव्हा. रेव्हेन्यू कॅन बी सेल्स, रेव्हेन्यू कॅन बी इंटरेस्ट, एनिथिंग. पण जोपर्यंत तुम्हाला ऍक्च्युअल मध्ये ते कॅश मध्ये भेटत नाही, सेल केल्यानंतर ऍक्च्युअल कॅश मिळत नाही, तोपर्यंत तुम्ही त्याला तुमचा रेव्हेन्यू, तुमचं इन्कम म्हणून रेकॉर्ड करणार नाही. And when they record an expenses, and expenses are recognized when cash is paid. जोपर्यंत recognize चा मतलब you will not record it as an expenditure until you are actually paying that cash. So any income will be recorded if it is received, and any expenditure is recorded only when it is paid. Such method of accounting is usually followed by professionals such as doctors, lawyers, chartered accountants, and non-for-profit organizations. Now, most of the cases, doctors may little follow this, but even lawyers and CAs पण कोणी हे बेसिस यूज करत नाही फारसं, कारण की हे तुम्हाला तुमच्या बिझनेसची कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नाही देऊ शकत. जे की तुम्ही एक्सपेंडिचर इन्कर म्हणजे एक्सपेंडिचर इन्कर झालं म्हणजे काय, आता सपोज तुम्ही ग्रॉसरी शॉप मधनं जेव्हा उधारीवर तुम्ही घेऊन येता काही सामान, ते तुम्ही सप्टेंबर महिन्यामध्ये आणलं पण तुम्ही कॅश नाही दिली, तर विल यू से दॅट दिस इज नॉट अन एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ सप्टेंबर? असं म्हणू का आपण की नाही या महिन्यात तर माझं ग्रॉसरीचं काही शून्य बिल आहे, आय हॅव नॉट स्पेंड एनिथिंग ऑन द ग्रॉसरी? विल यू से दॅट there is no expenditure of the grocery in this month? No. Even though you have purchased it on a credit basis, we obviously say that की या महिन्याचा ग्रॉसरीचा खर्च आहे बाबा आपला 5,000 रुपये, तो भले तुम्ही आता कॅश मध्ये द्या किंवा 2-3 दिवसानंतर द्या किंवा सप्टेंबर संपल्यानंतर द्या, इट इज युअर दिस मंथ एक्सपेंडिचर. And that's what people will prefer to follow the accrual system of accounting and not the cash system of accounting. But ज्या ऑर्गनायझेशन खूप कट टू कट काम करतात की जर कॅश आली तरच खर्च करायचा, कॅश आली तरच खर्च करायचा, उधारीवर कुठलाच खर्च करायचा नाही, then those will definitely follow the cash basis. Okay, let's look at the accrual system of accounting. You will have to write this word to word. असंच लिहायचं तुम्हाला ह्याच्यामध्ये. So accrual system of accounting, under the accrual basis of accounting, the revenue, whether received or not, but has been earned or accrued in the accounting period. So let's stop over here. Under accrual basis of accounting, the revenue, whether received or not, revenue self तुम्हाला कॅश मध्ये भेटू दे किंवा नको भेटू दे, whether received or not, but has been earned म्हणजे तुम्ही वस्तू विकली आहे तर तुम्हाला कधी ना कधी तर त्याचे पैसे येणारच आहेत, तुम्ही अर्न केलंय ते, राईट? यू कॅन्ट से दॅट
if you work, how a salaried person works, he works for the month of September and then he get a salary in the month of October. So will you say that the salary which is for the month of September is my income for the October? Will you say that? सॅलरी आपण आपले आई वडील कधी काम करतात? सप्टेंबर मध्ये काम करतात. त्याचा पगार कधी मिळतो? ऑक्टोबर मध्ये मिळतो. मग आपण त्याला असं म्हणतो का की हे ऑक्टोबरचं इन्कम आहे माझं? आपण त्याला काय म्हणतो? सप्टेंबरचंच इन्कम आहे. बिकॉज यू हॅव अर्न दॅट अमाउंट in the month of September. You have earned that. Give me a minute. Huh? Sorry. So, but it has been earned or accrued. म्हणजे that you have already created an asset for yourself. हे तुमचा हक्क आहे की तुम्हाला त्या महिन्याची सॅलरी मिळायला पाहिजे. That means you have already earned that. Whether you received in cash or not, you have already earned that because you have already provided the services for the month of September. Okay, so in case of accrual system of accounting, please remember the word a revenue, whether received or not, but has been earned. When revenue will be recorded in the books of accounts, when revenue is earned. And expenses incurred, whether paid or not, is recorded, are recorded. So under the accrual system of accounting, when we are going to record the expenses, when they are incurred. Incurred म्हणजे liability create झाली. जर ग्रॉसरी आणली सप्टेंबर मध्ये, then anyhow will have to pay that grocery bill. That means liability आपका already, किसी को कुछ पे करना मतलब liability है, वो liability already create हो गया, इसका मतलब expenditure incurred हो गया. So this expenses incurred, whether they are actually paid in cash or not, has to be recorded in that month itself. In other words, revenue is recognized when it is earned or accrued, and expenses are recognized when these are incurred. Are you getting the meaning of these two words? These are the two most important words that you will have to write when you write the definition of accrual. In the accrual system of accounting, revenue is recognized when it is earned, and expense will be recognized or expense will be recorded when these are incurred, whether you pay it in a cash or not immediately. Okay, what are the two important words? Income is earned, whether received or not, and expense is incurred, whether paid or not. ऐसे बड़े हैंड राइटिंग में बुक के ऊपर लिख लो accrual system. Write down accrual system on whatever theory page you are right now. What you have to write today, you will obviously have to write these two paragraphs. आपने ये मेरे साथ ग्राफ बना लिया ना? This graph you made, right? Transaction, monetary, non-monetary. Yes. This I given you an example just for your understanding. If you want to write it down, well and good. If you don't want to write down, this theory part you will have to write down. ठीक है? So आपने आपके बुक के दो पार्ट्स किए हैं क्या? Have you made the two parts of your book?